योगः कर्मसु कौशलम्। है प्रोफेसर दर्शना भट्ट मैडम, जो हमें कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव लिटरेचर विषय पर आज हमारे साथ वक्तव्य देंगे। वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि आप प्रोफेसर दर्शना भट्ट मैडम अंग्रेजी विभाग, भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और आपके पास 35 वर्षों का अध्यापन का विशाल अनुभव है। आपके मार्गदर्शन में 34 छात्रों ने एमफिल किया है और आपके मार्गदर्शन में 15 जितने छात्रों ने अपना शोध कार्य पूर्ण किया है। आपके कई आलेख जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आपकी अब तक 11 पुस्तकें प्रकाशित हैं और गुजरात की विभिन्न यूनिवर्सिटियों में आपकी कई पुस्तकें जो हैं पाठ्यक्रम में शामिल है। ऐसे बहुत बहुविध विद्वान वक्ता आज हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से प्रोफेसर दर्शना भट्ट मैडम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में प्रोफेसर डॉक्टर दर्शना भट्ट मैडम को अपने वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। मैडम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। First of all, thank you very much, Rajendra Bhai. He has given a detailed introduction, and because he has given detailed introduction, first I will talk about the notion of comparative literature. Once I discuss the notion of comparative literature, I'll discuss the concept of comparative literature in Indian context. Then I will talk about aims and methods of comparative literature. Once I finish the aims and methods of comparative literature, I will discuss what is happening in contemporary era about contemporary literature. So that is how I will justify the entire lecture. First, provincial literature or regional literature is the literature which is written in one's own language. If we think about Indian context, we can say that Gujarati literature, Hindi literature, Marathi literature, these are, Marathi literature means the literature written in Marathi language. Gujarati literature means the literature written in Gujarati language. So that is called regional literature, or that is called provincial literature. Provincial literature, or the text written in regional or vernacular language, crosses the boundary of that particular province or that particular place and reaches to the level of national literature, that is known as national literature. For example, Rabindranath Tagore's collection of poem Gitanjali is written in Bengali language, or it is the contribution in the field of Bengali literature. But Rabindranath's Gitanjali or Bankim Chandra's Anandamath or Gora or Munshi Premchand's Godan, these texts are not limited to their own literature, but reaches to the level of national literature. So the second concept before we talk about comparative literature is national literature. So मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लिटरेचर और जो टेक्स्ट अपनी भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है, वो
वो टेक्स्ट नेशनल लिटरेचर में शामिल होती है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए कि रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि और बंकिम चंद्र आनंद मठ और प्रेमचंद जी गोदान, these are the texts of national literature. Once we complete the concept of national literature, then we have to think about general literature. Now general literature और वर्ल्ड लिटरेचर में तफावत है, डिफरेंस है। जनरल लिटरेचर में हम क्या करते हैं कि अलग अलग भाषाओं में लिखी गई जो किताबें हैं उसको इकट्ठी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तरामचरित और मालती माधवम और शेक्सपियर्स ऑथेलो और मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ये इकट्ठा करके हम एक जो ढांचा बनाते हैं उसे हम बोलते हैं जनरल लिटरेचर। But when I talked about Welt literature, remember kids, Welt literature is the term used first or coined by German poet Goethe. And when you talk of Goethe, you have to remember जो कवि अभिज्ञान शाकुंतलम को अपने मस्तक पर रख के डांस किया वो है जर्मन महाकवि गटे। उन्होंने पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट कॉन्सेप्ट इन जर्मन लैंग्वेज इज नोन एज वेल्ट लिटरेचर, जिसका गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अनुवाद किया और उसमें विश्व साहित्य रखा। तो विश्व साहित्य में सारे विश्व की चुनी हुई किताबें इकट्ठी करके हम एक रखते हैं। जैसे हम एमए में एक पेपर पढ़ाते हैं विश्व साहित्य की चयन की हुई कृतियां, बेस्ट वर्क्स रिटन इन वर्ल्ड लैंग्वेजेस, और जो वर्ल्ड लैंग्वेजेस में हम रखते हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में लिखी गई है वो भी रखते हैं, गते का फॉस भी रखते हैं, शेक्सपियर का ऑथेलो भी रखते हैं और कालिदास का रघुवंशम भी रखते हैं, कालिदास का मेघदूत भी रखते हैं। और फिर ये सब मिला के एक फॉर्मेट हम देते हैं, वो फॉर्मेट को हम बोलते हैं वर्ल्ड लिटरेचर यानी कि विश्व साहित्य। सो फार we have talked about provincial literature, अपनी भाषा में लिखा हुआ साहित्य। Then we talked about national literature, अपनी भाषा में लिखा हुआ साहित्य जब राष्ट्रीय चेतना को रिप्रेजेंट करते हैं, जब पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बोला रविंद्रनाथ गीतांजलि, that is national literature. Then we talked about general literature, then we talked about world literature. Now I try to define comparative literature. Comparative literature वैसे सीधी भाषा में मैं आपको समझ दूं तो कोई भी लिटरेचर, आप सब तो अध्यापक है, कोई भी लिटरेचर कंपैरेटिव थियरी के बिना विश्व व्यापक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, आपको सरस्वती चंद्र पढ़ाना है और जो हिंदी के अध्यापक है उन्हें गोदान पढ़ाना है, और जो संस्कृत के अध्यापक है उन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम या विक्रमोर्वशीयम या मालती माधवम पढ़ाना है, और जो इंग्लिश के अध्यापक है उन्हें शायद कोई एक टेक्स्ट पढ़ानी है, अंग्रेजी के अध्यापक को पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाना है। ये आप अपने ध्यान में रखिए। फिर अगर पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाना है या गोदान पढ़ाना है या कोई भी टेक्स्ट पढ़ानी है तो आप सीधे तो शुरू नहीं करोगे। Suppose you have to teach Paradise Lost, then you have to talk about Iliad, you have to talk about Odyssey, जो परंपरा वहीं से आती है, और रघुवंशम जैसे संस्कृत साहित्य की कृति है तो नाम ही बताता है रघु के वंश की गाथा, रघु के वंश की कथा इति रघुवंशम।
तो रघुवंशम पढ़ाने के लिए भी आप कैसे पढ़ाएंगे? पहले आप रामायण में जाएंगे, फिर आप महाभारत में जाएंगे। रामायण महाभारत की परंपरा, क्योंकि रामायण विश्व का आदि काव्य है, तो उन परंपराओं को लेकर आप रघुवंशम पढ़ाएंगे। अगर मुझे पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाना है, then I will talk about the first thing, इलियड जो ओडिसी जो ग्रीक साहित्य के महाकाव्य है। फिर धीरे धीरे करके आई टॉक अबाउट क्लासिकल एपिक। जैसे भारतीय परंपरा में रामायण महाभारत, एंड देन वी हैव अ ट्रेडिशन, which tradition is called classical epic tradition। वैसे एंड देन रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन के भाग में आते हैं। और पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज क्लासिकल एपिक, तो वो भी क्लासिकल एपिक परंपरा की भाग में आते हैं। ये सब क्लियर करके मैं बताना ये चाहती हूँ कि comparative literature or any literature, when you start talking about, you discuss one very important thing, and that very important thing is influence। पाश्चात्य परंपरा अभी है, वो ये कहती है no text is unified whole, no text is complete in itself। कोई भी टेक्स्ट बिना आधार पे नहीं रची जा सकती। जैसे कि सपोज रघुवंशम है और शेक्सपियर का ऑथेलो है, और कोई भी टेक्स्ट है, तो शेक्सपियर ने भी प्लूटार्च की लाइव्स देखी है, शेक्सपियर ने मैकियावेली पढ़ा है और फिर लिखा है। तो ये माना जाता है originality does not mean you have to create something original, because सारे संसार में कोई भी चीज ओरिजिनल होती ही नहीं। when you wish to create, either आपको कुदरत चाहिए, या आपको हिस्ट्री चाहिए, या आपको कोई अपने जीवन के निजी अनुभव चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, तो वही के आधार पे आप लिख सकते हैं। और इसीलिए सबसे पहला, बिफोर आई डिफाइन कंपैरेटिव लिटरेचर, आई जस्ट वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट no literature or no work of art is complete in itself, and because it is not complete in itself, it is based on either nature or history or politics। एक उपन्यास आप पढ़े, एक काव्य आप पढ़े, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें साहित्य सिर्फ साहित्य नहीं होता, साहित्य में समाज होता है, साहित्य में कुदरत होती है, साहित्य में जीवन होता है, साहित्य में राजकारण होता है, साहित्य में अर्थकारण होता है, और ये सब पूरा माहौल। इसीलिए तो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। बिना सोसाइटी, बिना अर्थकारण, बिना राजकारण, बिना जीवन, बिना कुदरत, और अभी जो कंटेम्पररी ट्रेंड आया है कि देखो जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे ये सब कुदरत में जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन के हिसाब से एक नई विद्या शाखा आई है, और ये विद्या शाखा को हम बोलते हैं इको क्रिटिसिज्म, पर्यावरणवादी संवेदना और विभावना। मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है, और जो बुक किताबें मेरे सामने रखी है, दे आर ऑल इन इंग्लिश, but because you have suggested that you use partially in Hindi, so अगर मेरी हिंदी में कोई गलती हो जाए, because at the spur of the moment I am using the term, और हिंदी वैसे मेरा विषय नहीं है, तो मेरी हिंदी भाषा में अगर कोई क्षति हो जाए तो मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैडम आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। समाज की जरूरियातें बढ़ती जाती है, वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन आता है, समाज में भी परिवर्तन आता है, जीवन में भी परिवर्तन आता है। और अब देखो जैसे टेररिज्म पूरी दुनिया में बढ़ रहा है,
तो हमें कहीं न कहीं सोचना पड़ता है कि उसका उपाय क्या है। हम हिंसक के मार्ग की ओर जाए या हम अहिंसा के मार्ग की ओर जाए। तो फिर पूरे जगत ने ये तय किया है कि जो गांधी कहते हैं कि नॉन वायलेंस कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड वॉर, वो हम महाभारत काल से और पूरी विश्व ने 2 वर्ल्ड वॉर देखे हैं। और 2 वर्ल्ड वॉर देने के बाद भी क्या हुआ, टी.एस. एलियट ने नोबेल लॉरिएट है, अंग्रेजी साहित्य के हैं, उन्होंने एक कृति लिखी है। वो कृति का नाम है वेस्टलैंड। उसका गुजराती अनुवाद भी हुआ है और गुजराती अनुवाद का नाम है ऊषर भूमि। ऊषर भूमि इज बंजर भूमि। और उसमें भी उन्होंने पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो विभीषिका, जो परिणाम हुए, उसकी बहुत अच्छे से बात की है। और फिर देखो, ये इन्फ्लुएंस में बता रही हूँ। फिर उन्होंने ये 5 भागों में ये सब डिटीरियोरेशन की बात की है। और फिर वो टी.एस. एलियट, वो अंग्रेज कवि हैं, अंग्रेज कवि गए कहाँ गए हैं, हमारे उपनिषद के पास। ही स्टडीड, टी.एस. एलियट स्टडीड उपनिषद in Sanskrit language, and finally he was so highly influenced by Sanskrit language. तो फिर ये मरुभूमि या ऊषर भूमि या वेस्टलैंड का जो अंतिम जो 5th पोर्शन है, उसमें लिखा है दा दत्ता दयात्म। और आश्चर्य की बात तो ये है, साहित्य के विद्यार्थी को ये समझना है कि पहले खंड में उन्होंने बोला ये डिटीरियोरेशन है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये है, वो है, 5 भाग तक ये चला। फिर बोले वॉर तो कोई भी समस्या का हल युद्ध नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अंतिम पंक्ति है जो 5th सेक्शन की नोबेल प्राइज विनिंग टी.एस. एलियट की कृति वेस्टलैंड के अंतिम शब्द है ओम शांति शांति शांति। दैट मीन्स कि पूरे युद्ध के बाद, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी टी.एस. एलियट जैसे दिग्गज कवि वो आशावादी है और वो बोलते हैं कि शांति के अलावा, और देखो ये अभ्यास की बात ये है कि शांति का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। वरना टी.एस. एलियट लिख सकता था पीस पीस एंड पीस, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा क्योंकि शांति का बहुत व्यापक अर्थ हमारे साहित्य में है। इसीलिए हम डेली प्रेयर जैसे करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। देन also we used to say ओम शांति शांति शांति। सो और जो गुजराती के अध्यापक है वो जानते होंगे कि उमाशंकर जोशी ने यस मयंक वॉर इन पीस यूथ एंड शांति बाय टॉल्स्टॉय, इट्स गुड ऑब्जर्वेशन। सो और गुजराती के जो अध्यापक है वो जाने कि उमाशंकर जोशी वो भी दिग्गज कक्षा के ज्ञानपीठ अवॉर्डी कवि है और उन्होंने भी विश्व शांति नाम का काव्य लिखा है। और उसमें भी जो झंखना है वो पहली लाइन उसकी यही है, विशाळे जग विस्तारे नथी एक मानवी, पशु छे पंखी छे वन्य जनुनी वनस्पति। सो आप देखो कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कभी भी मनुष्य के लिए शांति की कामना नहीं करती। इसलिए मैंने पहले बताया सर्व से शुरू होकर सर्व से हमारी प्रार्थना पूर्ण होती है। तो सर्व का हम विश्व व्यापक अर्थ करते हैं और उसमें हम पशु पंखी सब। तो फिर जो संकल्पना है वो संकल्पना के लिए मैं बताना ये चाहती हूँ कि अगर आप
कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन भाषा से जुड़े हुए, नॉट ओनली लैंग्वेज बट दोस हु आर कनेक्टेड विथ वर्ड्स, शब्द से जुड़े हुए, हम सब शब्द के उपासक है और शब्द तो ब्रह्म का स्वरूप है। जैसे वागर्थ इव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, वाणी और अर्थ की तो हम पूजा करते हैं, हम सब लोग शिक्षक है, तो शिक्षक तो शब्द के उपासक ही होते हैं। इसीलिए जो मेरा तो ये मानना है कि जो शब्द के उपासक है वो सभी तुलनात्मक, योर माइक इज जो शब्द के उपासक है वो सभी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से तुलनात्मक साहित्य से जुड़े हुए हैं। सो मैं ये मानती हूँ, इट मे बी माई पर्सनल ओपिनियन, बट आई बिलीव दैट बिना इन्फ्लुएंस आप साहित्य नहीं पढ़ा सकते, बिना सारी हम एनईपी में मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी बात करते हैं, तो हमारा साहित्य और विश्व का पूरा साहित्य तो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी पैदाइशी से होता है। क्योंकि अगर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता तो डिकन्स नहीं होता, अगर फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होते तो हमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड नहीं मिला होता, अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो आई कैन टेल यू किड्स, द बेस्ट पार्ट ऑफ द वॉर ऑफ महाभारत इज हमें भगवत गीता मिली। जो युद्ध ही नहीं होता, अर्जुन का विषाद ही नहीं होता और अर्जुन के विषाद के बाद ये प्रश्न नहीं होते तो हमें जगत साहित्य का सबसे बढ़िया फिलोसॉफी का पुस्तक कैसे मिलता। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम सब कहीं न कहीं शब्द से, कहीं न कहीं कर्म से, कहीं न कहीं हमारी जो परंपरा है वो परंपरा में हम तुलनावादी है। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, वो अब हम जो फॉरेन लोग हैं वो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, आप भी करते हैं और हम इकोनॉमिक्स के उदाहरण देकर ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोलते हैं, लेकिन हम तो पहले से ही हमारी परंपरा सदियों से ग्लोबलाइजेशन ही है, क्योंकि हम मानते हैं अयम निजम परो वेत्ति, अयम निजम परो वेत्ति गणना सा लघुचेतसाम। Those who are very short-sighted, they only think about ayam nijam, this is mine and this is yours. Ayam nijam paro vetti ganana sha laghuchetasam. Second line is very important, which gives the entire concept of the whole world is a family. Ganana sa laghuchetasam udar charitanam tu. We are teachers, we are Indians, and the whole world should follow that thing. उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब है। अगर हम ये मानते हैं तो फिर हम ये कक्षा तक पहुंच सकते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं ये भी नहीं हूं, मैं स्त्री भी नहीं हूं, मैं पुरुष भी नहीं हूं, मैं शिव के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ आत्मा हूं। तो इस पूर्व भूमिका के साथ मुझे ये कहना है, यू कैन नॉट इंटरप्रेट लिटरेचर without comparative approach, you cannot analyze literature without comparative approach. Whether you know the technology, whether you know the methodology, whether you know the nuances of comparative literature, your reading of literature remains incomplete if you fail to apply comparative literature. So this is the background of my job, and then say technically also you should know that earlier in Western concept Greek literature used to be only literature. Like when we talk about Indian literature,
we think first about literature written in Sanskrit. Then in 1886, Matthew Arnold, a Victorian poet, first used the term, remember this for your examination, first used the term comparative literature. Matthew Arnold, Victorian poet, professor of poetry, 1886, first used the term comparative literature, and he made a statement that if we wish to know our own literature, it is obvious that you should know others. Others means if you would like to know Bengali literature, or if you wish to know German literature, and besides German literature, if you know one other literature, then you will be able to interpret the text by keeping holistic approach in mind. In 20th century, again I quote T.S. Eliot. In his essay, Functions of Criticism, he made a statement. He talks about two tools of comparative literature, that comparison and analysis. Comparison and analysis are two tools for a critic. A critic cannot evaluate any work of art without two tools. One, he puts comparison first, comparison and analysis. Then, say later on, America, Canada, they have established the Department of Comparative Literature in foreign land, and so the literature, all the foreign thinkers, beginning from Matthew Arnold, we have Henry Remarque, we have Max Muller, all are the scholars of comparative literature. And Max Muller says up to that extent that all higher knowledge, remember this also to understand the concepts, all higher knowledge gains with comparison and rests on comparison. बिना comparison कोई higher knowledge प्राप्त हो ही नहीं सकता. This is what Max Muller believes. And then, so we have seen that Matthew Arnold, Henry Remarque, Max Muller, Goodyear, all these Western scholars, they started a discipline formally. As I told you, that human being is comparison from by birth only, but technically then in 20th century, again T.S. Eliot put a stress on comparison and analysis. Then say the definition of comparative literature is, the object of comparative literature is essentially the study of diverse literatures in their relation to one another. I repeat, the object of comparative literature is essentially the study of diverse literatures in their relation to one another. In this definition, diverse literature, that means you are comparing English and Sanskrit. For example, you can make a wonderful analysis of Shakespeare's play called Winter's Tale and Bhavabhuti's Uttaramcharit. Uttaramcharit is a play written in Sanskrit language, written in India. And Shakespeare's Winter's Tale, written during the 16th century Elizabethan period. Now say, as such, one text is written in Sanskrit, one text is written in English, one text written in 16th century, one text written earlier than 16th century. As such, there is no, one is based on Indian culture, one is based on English culture. As such, there is no connection, and yet I say that you can make a comparative study only because literature is the expression of universal human emotion.
So if you consider literature as the universal expression, लागणी पूरी दुनिया में सनातन ही है, प्रेम की परिभाषा पूरी दुनिया में एक ही है, और इसीलिए हम उत्तरामचरित और विंटर्स टेल की तुलना कर सकते हैं, हम टेम्पेस्ट और अभिज्ञान शाकुंतल की तुलना बिल्कुल कर सकते हैं। और देखो, हमारा पर्पस ये नहीं है, माइंड वेल किड्स, वी आर नॉट सपोज्ड टू प्रूव that whatever is written in Sanskrit is best and whatever is written in English is inferior. No, the very fact, as a comparist, you should know that comparative literature is the study of similarities as well as differences written between two texts. तो हम जो जो समान है उसका ही अभ्यास नहीं करते, लेकिन जो असमानता है उसका भी अभ्यास करते हैं, और समानता और असमानता के अभ्यास करने के बाद हम ऐसा नहीं कहते कि शेक्सपियर ग्रेट है और ये नहीं है। लेकिन this is the crux of the lecture, dear students, dear teachers, that comparative literature establishes bridges between two cultures, between two languages, between two societies, between two traditions. Comparative literature का उद्देश्य ही यही है कि संवाद की रचना की जाए। और सोचो, आप सब अध्यापक हो, इस युग में संवाद की कितनी जरूरत है। क्यों हम कोई बात पे, भारत पाकिस्तान पे लड़ाई, उत्तर दक्षिण कोरिया में लड़ाई, ये लड़ाइयाँ होती ही क्यों है? क्योंकि हम मनुष्य जात, मनुष्य के तौर पे संवाद करने में असफल हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि युद्ध का, शांति ही युद्ध का सॉल्यूशन है, युद्ध और वायलेंस कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन है ही नहीं। तो कंपैरेटिव लिटरेचर इज अ डायलॉग, डायलॉग मीन्स संवाद, संवाद मीन्स विच एस्टैब्लिशेस हार्मनी। अगर मैं आपके साथ अभी इस मोमेंट संवाद कर रही हूँ तो मेरा पर्पस ये है कि हम पहले कम्युनिकेशन करें, प्रत्यायन करें, फिर संवाद करें, और फिर हम आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः, ये कंपैरेटिव का मुद्रा लेख है, ये कंपैरेटिव का शिलालेख है। कंपैरिस्ट जो अपनी दरवाजे बंद कर दे तो कुछ हासिल नहीं होता है। आप कहीं भी जाओ, गांधी जी ने भी इस पर बहुत जोर डाल के कहा था, आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः, हमें पूरी चारों दिशा से, पूरे विश्व से अच्छे विचार प्राप्त हो। व्हाट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इज अच्छे विचार प्राप्त हो, और अच्छे विचार से ही अच्छा राष्ट्र बनता है, अच्छे राष्ट्र से ही अच्छा चरित्र बनता है, और अच्छे चरित्र से ही पूरा मानव समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। यू आर वेरी सेंसिटिव पीपल, सो इफ यू थिंक दैट कंप्यूटर आ जाएगा तो देखो, दो बार तो समस्या हो गई। कंप्यूटर आ जाएगा तो विश्व सुखमय हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो विश्व सुखमय हो जाएगा, कोरोना की वैक्सीन हमने कोविशील्ड कोवैक्स निकाल दी तो विश्व सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है अध्यापक मित्र। ये तो सब हमारी सगवड़ के लिए है, लेकिन सगवड़ कभी सुख नहीं देती, सुख देती है शांति, और शांति की ओर अगर हमें आगे बढ़ना है तो संवाद चाहिए, और संवाद के बाद जो स्टेज है हार्मनी, अनुकूलन, मैं आपके विचार को ग्रहण करूं, आप मेरे विचार को ग्रहण करो, वही तो कंपैरेटिव लिटरेचर है। वही तो मैं बताना चाहती हूँ कि डाइवर्स लिटरेचर को स्टडी करके भी you have to prove that literature is universal. Literature expresses the feeling which is eternal, which is ageless, which is timeless. इसीलिए तो बंधु हम इस जमाने में भी कालिदास पढ़ते हैं, प्रेमचंद जी पढ़ते हैं। आप मानते हो कि गोवर्धन राम का सरस्वती चंद्र कभी आउटडेटेड होगा? आप मानते हो पन्नालाल ने मानवीनी भवाई जो
जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ मिला था, उसमें 2 चीजें बहुत अच्छी लिखी है कि दुनियाમાં ભૂંડામાં ભૂંડી ભૂખ છે અને ભૂખથી એ વધુ ભૂંડી ભીખ છે, ये आप बदल सकते हैं। चाहे भाषा मुझे गुजराती नहीं आती और मैं ट्रांसलेशन से भी पढ़ती हूँ, लेकिन जो इमोशन है, जो बताया है कि भूख बुभुक्ष, और संस्कृत में भी यही बताया है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, जो अगर सबसे सुख की शुरुआत भी पेट से होती है। आप खाना खाते हैं, आप थोड़ा बहुत सगवड़ के साथ जीते हैं, तभी वो साइकोलॉजी कहती है, वो साइंस कहता है कि तभी आप विचार कर सकते हैं। भूखे भजन न होय गोपाल, अगर पेट खाली है तो भजन भी नहीं होता, ईश्वर भी याद नहीं आते। So the point which I am discussing is that the very aim of comparative literature is to build the bridges. So the title of today's lecture is, apart from contemporary trends, it is building bridges. Say here, teachers of Gujarati, they are here, teachers of Sanskrit, teachers of Hindi, and teachers of English. So what are we doing here? How can a person who does not know English can enjoy my lecture? How can a person who does not know Hindi can enjoy my lecture? You can enjoy my lecture only because my intention is to establish the dialogue with you. So dialogues तो आंख से भी बन सकता है, we are doing it online, फिर भी I connect myself with you, looking at the picture on the computer, you are listening to me, and without looking at you also I feel that you are responding not to what I say, but you are responding to my feelings, you are responding to my emotion, you are responding to my thought. I don't wish that all of you should agree with whatever I say, because disagreement is also the part of education, and if you disagree with me, then also it is a training, it is a part of learning. So comparative literature, the first aims and objective is to evaluate, to analyze literature by keeping wider perspective in mind, and by applying methodology in comparative literature, what we are supposed to prove is literature is universal. Then now we divide for the matter of convenience that African American literature, Gujarati literature, Hindi literature, women's writing, Dalit literature, but this is for the convenience of the syllabus we divide literature, but literature is nothing but the literature. Literature is nothing but the expression of our feeling. So after that, say I have talked about the notion of comparative literature, I have talked about definition of comparative literature, I have talked about what is happening in West in comparative literature. Now I just would like to focus on comparative Indian literature. ये बड़ा गजब का वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। आप सब अध्यापक हैं, डू यू नो what is the definition of Indian literature? Say critics think that in India we have Marathi literature, Tamil literature, Gujarati literature, Hindi literature, Sindhi literature, Assamese literature. My question to you is, do we have Indian literature? Question mark. Or how can we say that Gujarati literature is also Indian literature, Sindhi literature is also Indian literature, Hindi literature is also Indian literature? So say the notion, this is added information, those who would like to work further in comparative theory and comparative literature, that India is the only nation which is multilingual and multicultural, and because we are multilingual and multicultural, our characteristic is unity in diversity and diversity in unity. So
when we think about or when we try to define Indian literature, we are not using the narrow sense of the term that Gujarati literature or Hindi literature. So, we were talking about the notion of comparative Indian literature, and comparative Indian literature is the notion, because we are multilingual and And multicultural, our concept is when we your mic, it suggests on my mic. No, your mic. Okay, it's okay. So, when we talk about Indian literature, say Radhakrishnan, at the establishment of Central Sahitya Academy, and they run the magazine, literary magazine, which you might be aware, it is called Indian Literature. And then, in the first meeting, Sarvapalli Radhakrishnan, he has defined Indian language, Indian literature by saying that Indian literature is one. Remember, kids, Indian literature is one, written in many languages. Again, I repeat, Indian literature is one, written in many languages. भारतीय साहित्य की विभावना तो एक ही है, भाषाएं अलग हैं. I would explain it by giving you the example of river and ocean. जो भारतीय भाषाएं है सभी, वो वो एक साबरमती है, एक गंगा है, एक यमुना है, एक सरस्वती है, एक कावेरी है, ये अलग अलग नदियां है, वो अलग अलग भाषा है. और जो अलग अलग नदियां, जो अलग अलग भाषा एक सागर बनाती है, क्योंकि सभी नदियां सागर में मिलती है, तो जो सागर बनाती है, वो सागर की जो कल्पना है, जो सागर की परिभाषा है, वो परिभाषा को हम इंडियन लिटरेचर बोलते हैं. नाउ से कंपैरेटिव लिटरेचर is very useful method in evaluating Indian literature. I'll give you a few examples. For example, say suppose if you wish to compare a play written by Vijay Tendulkar, Girish Karnad, they are all contemporary, writing by using different techniques and methods. But for example, suppose if you compare Premchandji's Godan with Mulkraj Anand's Kuli. Kuli also talk about the class structure, and Mulkraj Anand's Kuli is the best representation of exploitation by capitalist society. So is the case with Premchandji's Godan. So you can make a wonder within one is written in English, Indian English, one is written in Hindi, but you can make a very good comparative study. For example, the poem Wasteland, again I refer to the Wasteland, and there is a famous Gujarati poet who happened to be the professor of English, and he writes in Gujarati, and so he has written a poem called Pravan Dweep. The Gujarati title, English has been translated by Professor Rita Kothari and Professor Subuna Ramanathan. The translation of the title of the English text is Coral Island, and the critics of Gujarati believe that Coral Island is the wasteland of Gujarati literature. So one is written in English, one is written in Gujarati, because the poet, who happens to be the teacher of English literature, while teaching wasteland to the students of English literature, the poet might influence or might get in touch with the poem, and he not translated, but he recreate the same poem into Gujarati. So one is English, wasteland,
One is Gujarati Coral Island. You can say we used to make wonderful experiment even in aesthetics. For example, Shankar Vedanta and Derrida's deconstruction, or the application of Shankar philosophy to Shakespearean play. Or I keep on telling my students that rasa structure or rasa principle is so very rooted in Indian aesthetics, and it is so very logical, it is so very universal, that you can evaluate Shakespeare by keeping rasa principle in mind. Those who are reading English, or even in India, the theatre of absurd is very popular, and theatre of absurd came into existence after Second World War and influenced by existentialist theory of Nietzsche and Camus. But the same, the feeling of void, the feeling of nothingness, you can find here somewhere in Gujarati literature also. So in English literature, it is the theatre of absurd, and in Gujarati literature, if you are familiar with Gujarati literature, Lab Shankar Thakur, Madhusudan, Madhu Rai, and some other, Chinu Modi, they started a group which is known as Ray Matha. So you can make a comparative study of the theatre of absurd and Ray Matha, one which happened in foreign land, and the writers, they are influenced by the nothingness of the nothingnessness of life, the void of life. And then we have a group called Remath, and of course Akanti Sabarmati. So the point is that Chinu Modi might not be aware about Harold Pinter, or Chinu Modi or Madurai might not be aware about the plays written in English, but through the translation, through the reading, they came into influence of theatre of absurd. One classic example, these are all the modern examples. You can make a wonderful study case, Pashupati by Satish Vyas, our own Gujarati writer, and Haivadana. And if you read Haivadana in English translation and Pashupati, you can find that Pashupati is also the recreation of Girish Karnad's Haivadana. One, a writer who writes in Kannada language, translates himself in this. Maybe Satish Vyas, a Gujarati dramatist, Gujarati writer, came into influence, or he might have read Haivadana in English translation, or maybe in Gujarati translation, and then say that is how influence work. And one classic example of comparative literature is the first epic, Italian epic called Divine Comedy and Bhagavad Gita. If you read all the cantos of Divine Comedy, Vishad is there, Gnan is there, conflict is there, and then say in modern times, Freud talks about psychoanalytical theory. Arjuna Vishad, my dear friends, is nothing but the psychological case. And then, so the Arjuna Vishad, and Vishad is the precondition for Gnana. So, Gita is a book which talks about three important principles of Indian philosophy: Gnana, Bhakti, and Karma. Say all the three are necessary. And if you read Divine Comedy, even Gujarati translation is available, so you will realize that how great mind think alike. One who writes in Italian language, one who writes in Sanskrit language, there is no connection, yet there is nothing but the connection. And so this is how you have to think about it. As we talked about, notion in Indian comparative Indian literature is different.
methodology is you can study influence, you can study subject matter, you can, for example, Kalidas's Rutu Samhar and the entire romantic movement. They talk about, they are Wordsworth, Coleridge, Keats, Shelley, Byron, they are all worshippers of nature. And you read Rutu Samharam, the description of 6 seasons, and even Meghdut, you can make a wonderful comparative analysis of the influence of Kalidas on romantic poetry or romantic poetry, the description of nature in Kalidas and all Kalidas's Abhignan Shakuntalam, Vikramavarshiyam, even the other place also, and say the description of Shakuntala also made by Kalidasa. Sarasijamanu Vitram, Shaivalinapi Ramyam, Nalinamapi Himansho, Lakshmi Lakshmi Kanoti, Iyamapi Manovnya, Shaivalinapi Kanavi. This is the version of Kalidasa. Kimi Vahi Madhuranam, He Mandan Akrutim. So, this is how you read Kalidas and you read Shakespeare parallel, and the concept of love or the presentation of love, the higher spiritual love, which you find in Vikramavarshiyam, Malvikagnimithram and Shakuntala, and the same Shakespeare's beautiful play Othello, which talks about the love which is not physical but higher than the physical, that is spiritual. And so a character called Desdemona says that I saw Othello's visage in his mind. I saw Othello's visage in his mind. That means that Othello used to be a Moor, used to be a black person, and Desdemona used to be a Venetian beauty, and she said, I saw Othello's visage in his mind. मैंने तो Othello का शरीर देखा ही नहीं, मैंने तो Othello का मन देखा है, मैंने तो Othello की हृदय देखा है, और मैं वैसे ही प्रेम में पड़ गई. तो शकुंतला और दुष्यंत का भी यही दर्शन है. और अंत में जब Othello को पता होता है कि डेस्डेमोना इनोसेंट है, तो देखो कितनी अच्छी बात शेक्सपियर ने बताई. शेक्सपियर हैज रिटन one, that is what Othello speaks, one not being easily jealous but being wrought, perplexed into extreme, one who loved too well but not wisely. Say, love is beyond just the attraction. Love is something where you give everything. Love is not possession. That is the philosophy which we find in Kalidas and which we find in Shakespeare. So the influence study, thematic study, you can make a representation, you can make a stylistic study, और रीति आप language का भी analysis कर सकते हैं. Then you can make the translation. Though translation is established a separate area, it is a part of comparative methodology. For example, Jhaverchand Meghani's, you all Gujaratis, even Hindis, they are familiar with a poem called Koino Ladakvayo. It is our Rashtragan kind, Rashtra poem, and the original, it is written Somebody's Darling. Okay, so Somebody's Darling is the original poem. Koino Ladakvayo is a translation by Jhaverchand Meghani. You can compare the original poem Eklo Chalo, Eklo Chalo, Ekla Chalo Re by Rabindranath Tagore, and Mahadev Desai's translation, Tari Jo Hak Suni Koi Na Aave To Eklo Jane Re. And then you keep the original in mind, you keep the translation in mind, and then you will be able to make the cultural connotation in the language. So Koino Ladakvayo originally written in English, the title is Somebody's Darling. Last 4 lines in Gujarati poem is A Patthar Par Kot. This all you know. Even if your language is Hindi, you should know.
એ પથ્થર પર કોતરશો નવ કોઈ કવિતા લાંબી લખજો ખાખ પડી આહી કોઈના લાડકવાયાની. This is the translation, and now I am quoting the Sanskrit translation of the same four line. Yasya basmankit bhumehe rachayatu kirti stambham tat stambhe ma alekhayatu dirgha sudirgham kavyam kevalam etad ullekhyam patitah વીરસ્ય ભસ્મ. Now say in Gujarati, લખજો ખાખ પડી આહી કોઈના લાડકવાયાની. That has been translated by poet with the word bhasma. Now you can look at the connotation and the nuances of the translation. લખજો ખાખ પડી આહી કોઈના લાડકવાયાની. And read the Sanskrit translation. केवलम एतत् उल्लेख्यम पतितः वीरस्य भस्म. Somebody's darling has been translated as पतितः वीरस्य भस्म. The first line say रक्त टपकती सौ सौ जोड़ी समरांगण थी आवे रक्त शरंती शत शत सैया समर भूमिया कायमती. I would advise you, if you write a paper, research paper, you can make, for example, there are many examples. Tattvamasi in the translation that thou art. So and then Akupar, all these texts are written originally either in Gujarati. You can Nirmal Verma Santi Marani also is available in English translation. Put both the texts together and make the cultural study, which is a very very important area. Say now we are talking about his story and her story and marginal voices and the post-colonial voices. If you say where am I in the history, history is always his story. Women are absolutely absent in his story. If you think all these ideologies, history is only Eurocentric history. Why? Even today we think that the color white is superior. The literature written by white people or colonizer, it is superior. And so if in a post-colonial world, when we talk about samvada, when we talk about ahimsa, when we talk about harmony, you have to remove these border lines. You have to remove these barriers to understand comparative literature in a holistic way. So these are all the methodologies of comparative literature. And now we talk about what is happening in India in 21st century in the field of comparative literature, and what is happening all over the world in the field of comparative literature. So the last topic which I would talk is comparative literature at the crossroad. Say now in West, literature written in one's own language, and so they provide us the limited perspective. Now in the modern time, we reinterpret even Ramayana, we reinterpret even Mahabharata, we reinterpret even the voices who are marginalized. So now say Ramayana parallel, we are thinking of Sitayana, Ramayana from Sita's perspective. We talked about women's writing. And women's writing is not, we need to redefine the gender. We need to redefine our role. And when we redefine our role, we will be able to know that we also, all the marginals all over the world, when I make a statement, all the marginals all over the world, I mean that why do we have Black literature or South African literature or African American literature or women's writing as inferior?
say, why can't, when we talked about democratic society, when we talk about the society in which we are all equal, then say we need not to stick to the text only, but we also write about हाँ हम ठीक, हाँ लक्ष्मण और उर्मिला ये भी मुझे पता है, और मैं यही बताने जा रही हूँ कि हम क्यों न कर्ण से पॉइंट, कर्ण के व्यू पॉइंट से महाभारत को समझे, हम क्यों शंभुक के पॉइंट से महाभारत को न समझे। और कई सारी रामायण महाभारत तो हमारी रगों में है, हमारे हृदय में है, और कई सारी रिटेलिंग भी हुई है, इवन इंग्लिश में भी महाभारत की रिटेलिंग और रामायण की रिटेलिंग चित्रा दिवाकुर्णी बनर्जी ने की है। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि एक ही कृति के कई सारे आयाम होते हैं, और ये इन सब आयाम एक इकट्ठा करके हम जब कोई कृति का एनालिसिस करते हैं तो हम सिर्फ उसमें स्टाइल नहीं देखते, हम सिर्फ उसमें भाषा नहीं देखते, हम सिर्फ उसमें थीम नहीं देखते, लेकिन जो कृति के एनालिसिस में महत्व का जो परिणाम है, परिमाण है, वो सॉरी, महत्व का जो परिमाण है वो ये है कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस। इसीलिए हमें जो कोई मैंने पहले ही बताया कि ये सुपीरियर या इंफीरियर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाट वी ट्राई टू प्रूव इज कि ये एक पर्सपेक्टिव हो भी सकता है, ये पर्सपेक्टिव हो भी सकता है। तो उस 21st सेंचुरी में कंपैरेटिव मेथड तो हमें वही रखनी है, ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट मैटर, थीम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन जो मार्जिनलाइज है, जो बिछड़े हुए है, जिसको इतिहास में कोई स्थान नहीं। आपको पता है कि जब शेक्सपियर लिखते होंगे तब कई सारे राइटर लिखते होंगे, जब गोवर्धन राम लिखते होंगे तब कई सारे राइटर लिखते होंगे, जब धर्मवीर भारती लिखते होंगे तो कई सारे राइटर लिखते होंगे, लेकिन एक पूरा युग है, जैसे निरंजन भगत युग, एज ऑफ शेक्सपियर। तो क्या शेक्सपियर के अलावा और कोई राइटर नहीं होगा? तो हमें ये शोधार्थी के रूप में, अध्यापक के रूप में हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जो पात्र को न्याय या अन्याय हुआ है, जो पात्र को आवाज नहीं मिला है, तो कंपैरेटिव लिटरेचर के जरिए हमें ये सब पात्र को ढूंढना है, ये सब पात्र को साथ में लगाना है, और फिर जो मैंने शुरू किया था कि कंपैरेटिव लिटरेचर, अभी नाउ वी नीड टू रीडिफाइन आवर हिस्ट्री, वी नीड टू रीडिफाइन, वी नीड टू रिकंसिडर आवर एंटायर ट्रेडिशन, और ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का कॉम्बिनेशन करके हमें कुछ नया बताना है। वरना आप सब जानते हैं कि जो लिखा गया है, जो कहा गया है, वो तो रिसर्च बनता नहीं। आपका काम क्या है अध्यापक के रूप में? मैं इतने साल से के तर्जुबे से कह सकती हूँ कि पीएचडी, और जो आप पीएचडी नहीं करो तो ठीक है, इट इज मैंडेटरी, सो यू कैन डू इट, बट आपको करना क्या है? यू हैव टू रीथिंक, और रीथिंक करके, क्योंकि जो नेचर है वो पर्यावरण है, वो पर्यावरण अब आप इको क्रिटिसिज्म बन गया, और पृथ्वी और नारी को इकट्ठा करके अब आप इको फेमिनिज्म बन गया। और द्रौपदी की बात, कितनी सारी कथाएं गुजराती में काजल ओझा से शुरू करके प्रतिभा रॉय और माश्वेता देवी ने भी द्रौपदी का प्रतीक के रूप में उपयोग किया है। तो कई सारे पर्सपेक्टिव है। तो शोधार्थी का और अध्यापक का कार्य क्या है? अध्यापक विद्यार्थी को तीसरी आंख देता है, जो तीसरी आंख दिखाई नहीं देती,
लेकिन वो तीसरी आंख है ज्ञान की आंख है, और जो ज्ञान की आंख जिससे मिलती है, यू हैव टू मेक देम, व्हाई डू यू टेक रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन इज नॉट जस्ट द फॉर्मेलिटी, ऑनलाइन जुड़े, थोड़ा सुना फिर चले गए, दैट इज नॉट, यस यज्ञ कन्या बाय Dhruva Bhatt, yes, thank you. So what I meant to say is, there are, say in West and in India, there are many theories. In contemporary theories, if we think about West, तो हम deconstruction, structuralism, post structuralism, modernism, पोस्ट मॉडर्निज्म और फेमिनिज्म के भी कितने सारे शेड है। अब हम वुमनिज्म के बारे में बात करते हैं, और अब तो हम, आप सबने मी लक्ष्मी मी हिजरा पढ़ी होगी, वो इंग्लिश और गुजराती ट्रांसलेशन में भी अवेलेबल है। तो हिजरा हम कितना डिरोगेटरी लैंग्वेज यूज करते हैं, दे आर वर्स, देयर लाइफ इज वर्स देन एनिमल। बट मेरा आग्रह है कि आप किशोर गौड़ का ट्रांसलेशन है, और उस ट्रांसलेशन में जो अपेंडिक्स से आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ कितनी नर्क जैसी है, और उस नर्क में से उभर कर एक लक्ष्मी पैदा होती है, लक्ष्मी नारायण, और वो पढ़ती है, लिखती है, सभा में जाती है, सेमिनार में जाती है, और अपनी कथा अपने शब्दों में बयां करती है, और तब एक कृति होती है, साक्षात अनुभव से निकल कर जो कृति आती है, वो कृति बनती है मी लक्ष्मी मी हिजरा। नाउ इन इंग्लिश LGBTQ लेस्बियन स्टडीज है, गे स्टडीज है, और महेश दत्तानी का एक नाटक है, आप पढ़िएगा, शायद मुझे पता नहीं गुजराती में अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन डांस लाइक अ मैन, तो एक हाँ गुजराती में अवेलेबल है अरुणा बहन? Okay, fine. Read Dance Like a Man and look at the ambiguity in the title. Generally, dance, Bharatnatyam or any Kathakali or Kuchipudi is associated with woman, dance and woman. But say the dance like a man, that man, you can think of Birju Maharaj. Why you wish to think Birju Maharaj? The first Tandava Nritya has been performed by none other than Shiva. So, and the same Shiva tradition has been continued in Dance Like a man who desired to be a dancer. He would like to pick up dance as a career. 7 Step Against the Fire also is a complex play about the relationship between a normal man and Gujarat. So what I propose is that comparative is one method, translation is another method, deconstruction is the third method, Paryavaraniya Vibhavana is, you cannot talk only about feminism the way it is, but then you feminism does not mean Virginia Woolf or does not mean Showalter, but what I wish is you can create your own shade of feminism from your reading, from your suffering, from your experience, and then you think about and you provide you redefine feminism, you redefine our colonial experience, and then you decide. At the crossroad is the title. So you decide that comparative literature के जरिए और कोई थियरी के जरिए आपको पहुंचना क्या है, आपका लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, और वंस यू डिसाइड द गोल से संसार में कितने सारे ज्ञान तो असीमित है, ज्ञान की कोई व्याख्या नहीं है, ज्ञान का कोई स्वरूप भी नहीं है, ज्ञान अस्वरूप है, अमाप है, इन्फिनिट है, और उस इन्फिनिट से आपको कौन सी बूंद चुननी है। Don't think that you are PhD so you are a scholar of the subject. No, कौन सी बूंद आपको चुननी है,
कौन सी तरह में आपको जाना है वो पसंद करके, वो चुन के आप इसी तरफ प्रयाण करिए। और आपका जो प्रयाण है, इफ यू सिलेक्ट द राइट डायरेक्शन, then literature is nothing but the inspiration. Literature is nothing but the motivation. And don't worry that what will happen to the language, and say we have to promote matrubhasha and we have no bhasha. Say without a bhasha, technology is not going to survive. Without shabda, teacher is not going to survive. Without knowledge, से अपनी परंपरा तो ये कहती है सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति दिला दे, जो मोक्ष दिला दे। वी बिलीव इन धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, जो हमें मोक्ष दिला दे, जो हमें मुक्ति दिला दे, इसीलिए वो विद्या पढ़ना। विद्या सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए मत पढ़ो। वे अर्थोपार्जन है, मेरी संस्कृति तो ये मानती है धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। सो एंड वेद व्यास जी ने महाभारत में कहा है ऊर्ध्व बाहु वीरोमेश न कश्चित् शृणोति में धर्माद अर्थस्य कामस्य सकिमर्थम सेव्यते। सो हमारी परंपरा में तो धर्म सेंटर है और मोक्ष हमारा लक्ष्य है, और मोक्ष को पाने के लिए आप उसी तरफ गति करें, उसी तरफ प्रयाण करें। टीचर्स विथ ड्यू रिस्पेक्ट, से ऑनलाइन में दिक्कत, काफी अकेले बोलना पड़ता है। आई कांट सी ऑल ऑफ यू बट स्टिल, एंड अब देर आर सर्टन लिमिटेशंस एज वेल टीचिंग ऑनलाइन, दैट एज अ टीचर यू नो, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट to enlighten you with whatever the little knowledge I have. Still we have 10 minutes. If you have any question, any comment, any observation, say अगर भाषा में कोई गलती हुई हो, because I prepared my lecture in English and then suddenly you say that talk in Hindi. So but say as a comparison, I have given example from Gujarati literature, whatever little I know about Sanskrit literature, Hindi literature and English literature. So I think I tried to, and I don't keep anything, not even you cannot see anything on my paper. It was all spontaneous. No, I never organized my talk because I speak from heart to another heart. So I don't have anything at all on my paper. It is no PPT, nothing, no technology, just you and computer. But still, if you have any observation, any question, and disagreement also is the part of education, I believe. So even if you wish to criticize as a teacher, as a democratic teacher, I accept that too. Now we have 10 minutes. Please, your question, your analysis, your observations are welcome. Thank you so much.